हेलो एंड वेलकम। आज महाराष्ट्र सेट जून 2025 का पेपर 2 इकोनॉमिक्स का सेट ए सॉल्व करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Why does a firm under perfect competition continue to operate in the long run despite earning only normal profit or zero profit? A firm operates at socially optimum level of output in the long run. The firm achieves maximum productive efficiency in the long run. The opportunity cost of the self-owned factor is already being recovered by the firm in the long run, or all the firms are operating under identical cost condition in the long run. So question is asking, despite of earning only normal profit or zero profit, why does a firm under perfect competition continue to operate? So as we all know that industry is a price maker under perfect competition and a firm is a price taker. तो ये जो प्राइस है वही हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा, क्योंकि डिमांड कर्व ओवरलैप कर देता है, इसलिए प्राइस और डिमांड कर्व दोनों एक ही लाइन पे दिखते हैं और वही फर्म एक्सेप्ट करती है प्राइस। सो प्राइस इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, और ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो जब ए आर और एम आर कर्व को टच करेगा वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब यहाँ पर दो पॉइंट है जहां पर एटीसी ए आर और एम आर को टच करते हैं, तो हम वो पॉइंट एक्सेप्ट करेंगे जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट। तो ATC equals to AR equals to MR is gives us normal profit और zero profit in the terms of economic। तो इकोनॉमिक में नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो प्रॉफिट एक ही होता है, इसलिए ATC equals to AR equals to MR, बट ATC जहाँ पे नीचे से टच करेगा AR और MR को, टेंजेंट फ्रॉम बिलो विल बी कंसिडर्ड। तो ये क्यों होता है कि AR equals to ATC है तभी भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों डिफरेंट होते हैं, पर ए आर इक्वल्स टू ए टी सी पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन दैट ए टी सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड फैक्टर इज ऑलरेडी बीइंग रिकवर्ड बाय द फर्म इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में ए टी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाता है, ए टी सी इक्वल्स टू ए आर होता है, जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what is the short run supply curve of a firm in a perfect competition market? The part of marginal cost curve that lies above average cost, the part of marginal cost curve that lies above average fixed cost curve, the part of marginal cost curve that lies above average variable cost curve, or the part of average variable cost curve that lies above marginal cost curve. तो what is the short run supply curve of a firm in perfect competition market? तो फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या बनेगा? तो एटीसी अगर ये है तो एवीसी बनेगा ये, और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को बनेगा ये। अब व्हेन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, वो बनेगा सप्लाई कर्व। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट लाइज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होगा तो फर्म शट डाउन हो जाएगा। अगर फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो फर्म शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टीपी इज मैक्सिमम एपी इज डैश एंड एमपी इज डैश। वो पार्ट जहां पे टीपी मैक्सिमम है तब एपी क्या होगा और एमपी क्या होगा? तो एपी फॉलिंग होगा और एमपी जीरो होगा। तो व्हेन टीपी इज मैक्सिमम AP is decreasing and MP is zero. So option C is correct answer. Next, according to Bergson-Samuelson social welfare function approach, social welfare is maximized when social IC is tangent to UPC, social IC intersects UPC, social IC is tangent to PPC, or social IC intersects PPC. तो as you all know, IC कर्व जब टेंजेंट होगा यूपीसी को तब हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू मेंटेन प्राइस लीडरशिप द डोमिनेंट फर्म मस्ट एंश्योर दैट द फर्म डू नॉट प्रोड्यूस द स्मॉल फर्म डू नॉट प्रोड्यूस मोर और लेस देन लेवल agreed upon market sharing agreement
It does not charge a price higher than market price. Small firm do not improve quality of product, or small firm do not introduce innovation. So correct answer is option A, because अंडर ओलिगोपोली मार्केट जो प्राइस लीडर होगा, जो डोमिनेटिंग फॉर्म होता है, वो फोकस करता है, इंश्योर करता है कि स्मॉल फॉर्म डू नॉट प्रोड्यूस more or less level that is agreed by the market. So option A is correct answer. Next, in Chamberlain's alternative approach, why does the excess capacity of a monopolistically competitive firm emerge? Absence of active price competition despite free entry and exit, active price competition and free entry and exit, active price competition or free entry and exit. Correct answer is option A. एडवर्ड चैम्बरलिन का अल्टरनेटिव अप्रोच ये बता रहा है कि excess capacity of a monopolistically competitive firm emerge because of there is absence of active price competition and free entry and exit. दोनों ही करेक्ट आंसर है ऑप्शंस, इसलिए ऑप्शन ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. Next, which of the following term is more important in welfare economics and designing government policy? IC, consumer surplus, equimarginal utility, or revealed preference? Option B is correct answer. Consumer surplus is a core of welfare economics and government policy. Next, which of the following is an example of adverse selection? Adverse selection means negative selection, buying a used car, health insurance, buying a high quality product, or investing in competitive capital market. तो सेट ने इसे डी ग्रेड दिया है, दैट इज ड्रॉप्ड. तो क्वेश्चन इज इररिलेवेंट. All the options are irrelevant actually. Next, question number 9. Which of the theorem of welfare economics consider that the general competitive equilibrium is Pareto optimal? First theorem, second theorem, both, or none? तो Pareto optimal क्या बताता है कि no one can be made better off without making someone else worse off. So that is covered under first theorem of welfare economics. So option A is correct answer. Next, which of the following explains the concept of risk? When variability of possible outcome is very high, when variability of possible outcome is very low, variability of possible outcome is constant, or highly accurate. Option A is correct answer. रिस्क वही रिप्रेजेंट करता है वेरिएबिलिटी, जब हाई वेरिएबिलिटी है तब ज्यादा रिस्क होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द assumption of pure competition? Select the correct answer from the code given below. The firm in pure competition is price taker. True. Firm produces homogeneous product. True. This market includes large number of firms. True. The firm produces heterogeneous products. No. Homogeneous product है, तो 1, 2, 3 are correct statement and option D is correct answer. 1, 2, 3 statements. Next, in the equation Cp equals to KYP, where Cp means permanent consumption, Yp means permanent income, and K is proportion of that permanent income spent on consumption. So K is determined by interest rate, correct? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से सेविंग्स एंड कंजम्पशन पे इम्पैक्ट होता है. प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ, करेक्ट. डिजायर टू एड टू वंस वेल्थ, करेक्ट. इन्फ्लेशन रेट और परमानेंट इनकम नहीं आएगा, तो 1, 2, 3 आर करेक्ट. 4 and 5 आर नॉट करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच इज द शॉर्ट रन Keynesian consumption function? C equals to A plus BY. A is correct answer. When income of individual of household falls, their consumption expenditure does not fall to that extent. It is known as dash. Demonstration, income, ratchet, or uprise effect. Option C is correct answer. Next, choose the correct statement. Transfer payment and net interest payment on public debt are included as payment in foreign account in social accounting system. तो सोशल अकाउंटिंग सिस्टम में 4 अकाउंट होते हैं. प्रोडक्शन अकाउंट,
कंजम्पशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फॉरेन अकाउंट। तो इसमें रिसीट साइड, पेमेंट साइड किस साइड आएगा? तो पेमेंट साइड ऑफ कंजम्पशन अकाउंट आएगा। तो ट्रांसफर पेमेंट आर एंड नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट आर इंक्लूडेड इन एज पेमेंट इन कंजम्पशन अकाउंटिंग सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इज करेक्ट आंसर। और क्या ऑप्शंस दिए? रिसीट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट या रिसीट साइड ऑफ कंजम्पशन अकाउंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ट्रांसफर पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों कंजम्पशन अकाउंट के पेमेंट साइड आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इंडिया एक्सपीरियंस ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ट्रू। 1992 में ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। इंडियन रूपी वॉज लिंक्ड विद पाउंड स्टर्लिंग, ट्रू। 1835 टू 1947 ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में पाउंड स्टर्लिंग के साथ लिंक था। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ट्रू। इंडिया इज यूजिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, नो। इंडिया में मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम चलता है और मैनेज फ्लोट मीन्स जो डिमांड सप्लाई मार्केट डिटर्मिनेशन के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होता है, प्लस सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इंटरफियर्स व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन डी इज फॉल्स स्टेटमेंट। Next, in the Keynesian range of LM curve, monetary policy is fully effective, fiscal policy is ineffective, both are true or both are false. So this is classical range, this is intermediary range, and this is Keynesian range. So there is no impact of interest rate and income. So increase in money supply doesn't reduces interest rate. So there is no effect. That is, monetary policy becomes ineffective. मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव रहेगा, हाईली इफेक्टिव। इंटरमीडियरी में लेस इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी भी लेस इफेक्टिव अंडर इंटरमीडिएट रेंज। और क्लासिकल रेंज में मॉनेटरी पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव एंड फिस्कल पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव, इनइफेक्टिव। तो Keynesian रेंज में मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, तो ए इज रॉन्ग, and fiscal policy is effective. So B is also wrong. Both are false. Option D is correct answer. Next, balanced budget multiplier states that if government spending and taxes change in equal amount, then income will change by the amount equal to change in government expenditure and value multiplier will be dash. Correct answer is 1. Change in Y equals to change in G plus change in tax. So ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, उसकी वैल्यू है 1. The ratio of cumulative loss of GDP as a result of disinflation policy to reduction of inflation that is actually achieved is dash. Inflation unemployment trade-off, sacrifice ratio, growth inflation trade-off or growth price trade-off. Correct answer is option B, sacrifice ratio. Next, which of the following are not classical principles? Supply is equal to demand, money is used as store of value. Classical economist rejected money as a store of value. Interest rate is flexible. Capitalist economy is not self-equilibrating. No, no government intervention in the economy. So option B and 4, 2 and 4 are not classical principles. So option D is correct answer. Next, liquidity preference curve is downward sloping from left to right because ये liquidity preference curve is decreasing from left to right because when the rate of interest is low, central bank reduces supply of money. As the rate of interest falls, opportunity cost of holding money does not change. Rate of interest rises, opportunity cost of holding money rises, or as a rate of interest rises, opportunity cost of holding money falls. The correct answer is option C because the rate of interest बढ़ेगा तो money available with the people will also fall. So opportunity cost increase होगा. ये देखो, rate of interest अगर बढ़ेगा तो money available with the people reduce होगा, इसलिए opportunity cost बढ़ेगा, तो LPC
is downward sloping from left to right is correct answer. Next, the technological relationship between the change in capital stock and change in level of output is defined as output coefficient, multiplier coefficient, incremental capital output ratio, or investment multiplier. Option C is correct answer. Next, people quickly form and revise their expectation using all available information and intelligently predict the change in price and form their expectation on that basis. This statement is related to classical theory, Keynesian theory, adaptive expectation approach, or rational expectation approach. Option D is correct answer. रेशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच का मीनिंग ये होता है कि जहां पर ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर ले. नेक्स्ट, which of the following is not an example of negative externality? Air pollution, vaccination, contamination of water, or crime? Option B is correct answer. Air pollution negative, contamination of water negative, और crime negative externality represent करता है. Vaccination positive externality represent करता है. Next, which of the following statement is true in case of principle of equal marginal sacrifice? Equal marginal sacrifice के बारे में पूछा है. Each taxpayer bears the same absolute loss of utility from taxation. ये equal absolute sacrifice represent करता है. Each taxpayer bears the tax burden in such a way that the pre-tax marginal utility of income is same for everyone. ये tax को ignore कर रहा है, इसलिए ये नहीं आएगा. Each taxpayer bears tax burden in such a way that the post-tax marginal utility of income is the same for everyone. Option C is correct answer. Next, in the closed economy, the MPC is 0.75 and the average tax rate is 30%. What would be the size or value of government expenditure multiplier? So multiplier का formula है 1 divided by 1 minus MPC into 1 minus tax. 1 divided by MPC. MPC is 0.75 multiplied by 1 minus tax is 30%. So 1 divided by 1 minus 0.3 is 0.70 into 0.75. 0.525 मिलेगा. 525 minus 1 divided by 0.475. तो 1 divided by 0.475 equals to 2.11. Option B is correct answer. Next, according to Union Budget 23-24, the total transfer to the states and UT are estimated to be dash of public expenditure of financial year 23-24 में ये था 41.36%. When individual with unequal tax paying ability are taxed unequally in order to equalize the sacrifice is called as horizontal, vertical taxable capacity or tax avoidance. Correct answer is option B, vertical equity. Means more income, more tax. Next, which of the following is an example of built-in flexibility? Welfare grants, infrastructure spending, fiscal deficit और unemployment insurance. Built-in flexibility automatic stabilizer की तरह काम करता है, जहां पर more unemployment insurance is required if there is higher unemployment in the market. Option D is correct answer. Next, balanced budget multiplier works only if transfer payments are zero, change in income divided by change in government spending is negative, taxes are regressive or tax base is small. Option A is correct answer. Transfer payments are zero. Next, arrange the following in descending order according to the extent of expenditure of Union government in budget 23-24. Central sector scheme, interest payment, state's share of tax and duties, or centrally sponsored scheme. 2, 3, then 1 and 4. 2, 3, 1, 4. Option C is correct answer. याद रखना हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, फिर जो जीएसटी का अमाउंट होता है उसमें से स्टेट का शेयर रिटर्न करते, तो 2, 3 will be the starting point. Next, the Kelkar committee recommendation are related to fiscal consolidation. Correct. Option A is correct answer. Next, diffusion theory of tax incidence states that tax burden is shifted and reshifted
until it is spread throughout the society. Possibility of diffusion of tax burden is more in indirect tax. New taxes are preferable than old tax. No. Tax diffusion deals with tax incidence. Correct. 1 to 4 are correct statement and option B is correct answer. Next, according to Harrod model, the natural rate of growth is determined by current growth rate of working population and current potential of for which progression? Technical progression. Option C is correct answer. Next, what is correct sequence of stages in Marx's theory of economic growth? Slavery, capitalism, primitive communism, feudalism, socialism, or communism. The correct sequence is primitive communism first, then slavery second, then feudalism third, then capitalism fourth, then communism, then socialism and communism. तो fifth and sixth. तो correct sequence होगा 3, 1, 4, 2, 5, 6. 3, 1, 4, 2, 5, 6. Option D is correct answer. Next, which growth model inspired the use of capital output ratio for development planning? Harrod model, Solow model, Kaldor model, or Feldman model? Option A is correct answer. It is Harrod model. Next, how does neoliberalism affect economic growth? Free market, economic freedom, allocative efficiency, and economic growth. Correct? Free market, privatization, deregulation, less government interference, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Kenya was the first country where Dash model was implemented to control high unemployment in their cities. Lewis model, Aristotle model, option B is correct answer. Next, the solo growth model describes how output is determined at the point of time, how output is determined with fixed amount of labor and capital, how saving population growth and technological change affect output over time. Option C is correct answer. Next, according to John Robinson Golden Age Equilibrium Model, national income is sum of dash total wage bill and total profit, output and total demand, total capital, total labor, or total rent, total input. Option A is correct answer. Next, which of the following strategies about imbalance growth is right? Deliberate imbalance in favor of some sector, correct? Option 1 is correct answer. Deliberate sectoral imbalance होना चाहिए. तो option A is correct answer. Next, in Solow's model, the economy achieves steady state growth path because capital labor ratio adjusts through time to equilibrium value of the ratio. Correct? Option A is correct. The coefficient of production are fixed. ये Leontief model के बारे में बता रहे हैं, तो option A is correct answer. B is not correct. Next, in endogenous growth model, which of the following variable is considered endogenous? Learning by doing, technological advancement, investment in human capital, or population growth. 1, 2, 3 are correct because in this model, growth is driven by internal factors. That is, learning by doing, technological advancement, and investment in human capital. Option D is correct answer. Next, in case of Hirschman's unbalanced growth theory, which of the following statements are not true? False statement हमें identify करना है. The unbalanced growth strategy is especially applicable to underdeveloped nations. Correct. Development occurs via excess capacity of social overhead capital. Correct. Development occurs via shortage of social overhead capital. Correct. And development occurs via equal simultaneous growth of social overhead capital and directly productive activity. D is not correct statement. So option D is correct answer. Next, according to Thomas Piketty, which of the following forces is the main driver of wealth inequality? Rate of saving less than rate of investment, greater than rate of return on capital, greater than rate of economic growth, or less than economic growth. Option C is correct answer. When R is greater than G, then wealth accumulates faster than income. तो जिसकी वजह से wealth inequality होती है. Option C is correct answer. If the bank purchases more of foreign exchange than selling of it,
then it will have a dash position. अगर ज्यादा परचेस किया, सेल कम किया, bank purchases more of foreign exchange than selling off, it is long position. Option B is correct answer. Short position means selling in advance या फिर selling more than purchasing. ओवरसोल्ड का मीनिंग भी सेम होता है और स्क्वायर ऑफ मीन्स सेल किया हुआ परचेस करना या परचेस किया हुआ सेल करना. इसका मीनिंग होता है स्क्वायर ऑफ. लॉन्ग पोजीशन मीन्स परचेस ज्यादा करना. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, an economy with long history of extensive trade barriers decides to switch to totally free trade. What is the most likely to increase in the short run? Government revenue, inflationary pressure, consumer surplus या profit of all domestic companies. तो सबसे पहले जो होगा वो होगा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा. इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस शॉर्ट टर्म में होगा, बाकी सारे लॉन्ग टर्म में होगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following is included in the capital account of India's balance of payment? Merchandise trade, balance of trade में कवर होता है, balance of current account में भी जाएगा. Banks overseas deposit is correct answer. कैपिटल अकाउंट में जाएगा. इंश्योरेंस पेमेंट भी करंट अकाउंट में जाएगा. सर्विस रेंडर्ड भी करंट अकाउंट में जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट. Mercantilists believe that nation could gain in trade only at the expense of other nations as trade is zero sum game. True. Mercantilism में zero sum game explain किया है. Mercantilism through declining is alive and well in 21st century. Both are true. Statement 1 and 2 both are correct. तो option C is correct answer. ये represent करता है modern new mercantilism theory, जिसमें 21st century में भी वो applicable होता है. Next, in the absence of trade, the nation's production possibility frontier is also its dash. Opportunity cost, exchange frontier, consumption frontier और autarky frontier. तो हमें पता है कि production possibility frontier में जितने भी पॉइंट्स के ऊपर आएंगे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, और यहाँ पे आएगा तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और बाहर पॉसिबल ही नहीं है. तो दैट इज कंजम्पशन फ्रंटियर. पीपीएफ इज कंजम्पशन फ्रंटियर ऑल्सो. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है और पूछा है कि एबीसीडी में से क्या करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. The volatility of the bond market is in direct proportion to the monetary and economic policy of the country of the participant. True, क्योंकि bond market का interest rate की वजह से monetary policy change कर सकते हैं. Bond market is a part of capital market. True, serving platform to raise fund for public sector companies, government and corporates. True, both are correct statement. And option D is correct answer. Next, match the following absorption approach. Banking sector, financial asset and liability, propensity to inflation and inflation. So absorption approach is related to Sydney Alexander, 1952. 3 related to balance of payment है. Banking sector, financial assets and liabilities ये जाएगा capital account में. 2 propensity to inflation is related to Magnifico, 1971. And inflation related to purchase price parity. 3241 is correct sequence, and option A is correct answer. Next, besides the static gain means short-term gains. Which of the following dynamic gains? Dynamic gain means long-term gains. Nations would receive after forming custom union. Economics of scale, admin savings, greater bargaining or trade creation. अब admin savings and trade creation short-term gain होता है. Economic scale is long-term gain. तो option A is correct answer. Next, which of the following is not an assumption of HO theory? HO theory के कौन से assumptions है वो पहले check कर लेते हैं. It is 2x2x2 model. That is 2 countries, 2 commodities and 2 factor of production. That is labor and capital. फिर production functions are identical.
आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी है, देन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नो टैरिफ बैरियर्स मीन्स फ्री ट्रेड है। अब चेक करते हैं, which of the following is not an assumption of HO theory? The production functions are same for commodities and for countries. True. टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी है जो हमारा assumption में देखा था। All function or production functions are constant returns to scale. True. Doubling input doubles output also. There are difference in the factor intensity for two commodities. True. One for labor and one for capital. Labor and capital are perfectly immobile between countries. See, labor and capital are mobile within the country and immobile between countries, but not perfectly immobile. So option D is not an assumption. Option D is correct answer. याद रखना, labor and capital both are mobile within the country and immobile outside the country between two countries, but not perfectly immobile. Perfectly word use किया है इसलिए D is not an assumption. Next, intra-industry trade widens the choices of consumers in each nation. True, there will be increase in competition and increase in variety of product. So widens the choice of for consumers in each nation. Then it reduces the degree of competition among manufacturers of the same class of product in each country. No, option 1 is correct, statement 1 is correct and second is incorrect. So option B is correct answer. Next, for the production function Q equals to 20K power 0.5 into L power 0.5, derive K equals to function of L when the isoquant Q equals to 100. तो कुछ नहीं, बस सिर्फ फॉर्मूला में Q को सब्सटीट्यूट करना है 100 से, तो 100 इक्वल्स टू 20K पावर 0.5 इंटू L पावर 0.5। अब 20 को डिनोमिनेटर में रख देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू K पावर 0.5 इंटू L पावर 0.5। 100 divided by 20 equals to 5. 5 equals to K power 0.5 and L power 0.5. कॉमन कर देते हैं, 5 equals to KL power 0.5. अब KL equals to 25. So K equals to 25 divided by L. So L 25L K equals to 25L power -1 होगा. So option B is correct answer. Next, find the determinants of matrix A. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, फॉर्मेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहाँ पे सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे ई आई माइनस एफ एच से, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी आई एफ जी, डी आई माइनस एफ जी, प्लस सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे डी एच एंड ई जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, नाउ वैल्यू इनपुट करते हैं, हमारे जो वैल्यू है वो क्या है, 461252 904। तो क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 4, वैल्यू इनपुट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 माइनस b 6 है, डी आई 2 इंटू 4 माइनस एफ जी 2 इंटू 9 प्लस c कितना है 1, डी एच 2 into 0 minus 5 into 9. So 4 multiplied by 2 into 0, 0 and 5 into 4, 20 minus 6 multiplied by 2 into 9, 18 और 2 into 4, 8, तो आएगा -10 प्लस 1 multiplied by 5 into 9, 45 minus 2 into 0, 0, so -45 होगा। 4 into 20, 80
माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 10 60 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा 45 इंटू 1 45 सो 80 प्लस 60 140 माइनस 45 95 तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 95 नेक्स्ट derive the marginal revenue function for the demand function q equals to 400 minus 0.1 p तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले डिमांड फंक्शन को सॉल्व करना होगा फिर टी आर कैलकुलेट करेंगे और एम आर कैलकुलेट करेंगे सो डिमांड फंक्शन क्या दिया है q इक्वल्स टू 400 माइनस 0.1 p तो 0.1 p इक्वल्स टू 400 माइनस q तो p equals to 400 divided by 0.1 minus q divided by 0.1 तो p होगा 4000 minus 10q अब tr का फॉर्मूला क्या है प्राइस इंटू क्वांटिटी सो p इज गिवन फी हमें कैलकुलेट किया हमने 4000 माइनस 10q मल्टीप्लाई बाई q जो जो ये है वैल्यू तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4000q माइनस 10q स्क्वायर अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एम आर मिलेगा सो डेरिवेटिव ऑफ टी आर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्यू इक्वल्स टू 4000 माइनस ये हो जाएगा 20q तो 4000 माइनस 20q है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट what is the point elasticity when the price is 12 rupees for the demand function p equals to 60 minus 3q so p equals to 60 minus 3q है price is given 12 rupees 12 equals to 60 minus 3q so 3q equals to 60 minus 12 so 3q equals to 48 q equals to 48 divided by 3 so q equals to 16 now p equals to 60 minus 3q है तो 3q equals to 60 minus p अब डेरिवेटिव निकालेंगे 60 minus p divided by 3 डेरिवेटिव निकाला सो ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 3 अब पॉइंट इलास्टिसिटी ढूंढना है तो पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय p into q so derivative is 1 divided by 3 negative multiply by p is 12 and q is 16 so minus 12 divided by 16 into 3 48 so minus 12 divided by 48 equals to 0.25 negative so negative 0.25 option C is correct answer next what will be the status of average variable cost marginal cost is less than AVS तो यहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में AVS नहीं होगा वो AVC होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही होगा सो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट तो जैसे कि ये एवरेज टोटल कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट नीचे से टच करके क्रॉस करता है उसके लोएस्ट पॉइंट पे तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एमसी इज लेस देन एवीसी होगा यहाँ पे तो एवीसी डिक्रीजिंग होगा सो एवीसी इज डिक्लाइनिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एंड इफ एमसी इज इक्वल टू एवीसी then AVC
is at minimum, lowest level पे होगा. And if MC is greater than AVC, जो क्रॉस करके ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया, तो क्या होगा? AVC इंक्रीजिंग. ये टाइम पे AVC एट मिनिमम और यहाँ पे AVC इज डिक्लाइनिंग, फॉलिंग. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. पर क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, वो AVC के बदले AVS लिखा हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए. नेक्स्ट, if the value of R, coefficient of correlation, is less than probable error, it means the value of R is not at all significant. True. Option A is correct answer. Next, if we toss three coins, the possible outcome of appearing two heads can be written as three coins, two heads का possible outcome है, तो option 3 is correct answer. Next, the Bernoulli distribution is associated with multi-nominal distribution, binomial. Binomial is correct answer. B. Next, which of the following is not described as dependent variables? Endogenous, regressant, controlled variables, or stimulus? So A and B both are dependent variables, but controlled variable remains constant and stimulus independent variable है. तो C and D both are correct answer. That's why question number 1464 is dropped. Next, when the variance of financial time series varies over time means long term, which of the following model is more suitable? Autoregression, moving average, ARMA, autoregression, moving average, arch and gauge, or autoregression, conditional heteroscedasticity, and generalized arch. So option D is correct answer. Next, the direct application of ordinary least square method simultaneous equation leads to consistent and unbiased estimation, unbiased and inconsistent estimation, consistent and biased estimation, or biased and inconsistent estimation. Option D is correct answer. It violates the OLS assumption. Next, type 1 error refers to, so null hypothesis, true or false, accept and reject. If null hypothesis is true and accepted, correct decision. If null hypothesis is false and rejected, correct decision. If null hypothesis is true and rejected, alpha error, means type 1 error. And if null hypothesis is false and accepted, then beta error, that is type 2 error, which is more dangerous. So type 1 error refers to null hypothesis true and rejected. Probability of rejecting false hypothesis or rejecting true hypothesis. Option B is correct answer. Next, which of the following is the Dorbish and Bollis method of constructing index, where L is Laspres and P is Parsons index? So DB method is an arithmetic mean of L and P. So L plus P divided by 2. Arithmetic mean means L plus P divided by 2. So which of the following option is correct? Option D is correct answer. Next, which of the following is correctly defined as coefficient of determination? R square की बात हो रही है, तो फॉर्मूला है 1 minus ratio of unexplained variation divided by total variation. तो R equals to 1 minus summation of U at I square divided by summation of Y I square. So formula 1 is correct answer. I means index of observation. So option 1 is correct answer. Next, the term demographic dividend is conceptualized by Warren Thompson, Landry, C.P. Blacker, David Bloom and David Canning. Option D is correct answer. Demographic dividend में क्या बताया है? There are 5 phases, 5 stages of demographic transition. Stage 1, 2, 3, 4, 5. और कंपेयर किया है बर्थ रेट और डेथ रेट को, तो उसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे क्या होगा वो बताया. ये याद रखना, सिमिलर क्वेश्चन हमें आगे भी पूछा है. So if birth rate and death rate both are high, so there is
पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन स्टेबल होगा। अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है तो बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगा, पर डेथ रेट भी ज्यादा है तो पॉपुलेशन फिर से गिरेगा। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा। सेम वे फॉर इफ बर्थ रेट इज लो एंड डेथ रेट इज ऑल्सो लो, तो भी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, बाकी के इजीली हो जाएंगे। इफ बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज फॉलिंग, तो देर विल बी रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। और इफ बर्थ रेट इज फॉलिंग एंड डेथ रेट इज लो, तो ग्रोथ स्लो होगा। और इफ बर्थ रेट इज बिलो डेथ रेट, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होगा। बर्थ रेट कम होगा डेथ रेट के कंपैरिजन से, तो डेथ रेट बढ़ा है इसका मतलब मीन्स पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। तो देर आर 5 स्टेजेस, याद रखना। बर्थ रेट के बदले फर्टिलिटी भी वर्ड यूज कर सकते हैं और डेथ रेट के बदले मोर्टेलिटी रेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो देर आर 5 phases ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। याद रखना 5 स्टेजेस है, 5 phases। आगे क्वेश्चंस आने वाले। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नॉट सो हार्मफुल बिकॉज फर्स्ट स्टेज याद है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, दोनों हाई है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। सी, फर्स्ट स्टेज में, हाई स्टेशनरी स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, choose the correct statement for the positive externality. People living nearby area and the factory workers suffer from deteriorating air quality. Negative externality. Real estate price would likely to increase because of construction of metro. Positive externality. Research and development creates benefit that helps society as a whole. ये दोनों positive externality है। People living near airport suffer from high noise level, negative externality. So A and D are negative externality, B and C are positive. So option B is correct answer. Next, which of the following is the largest source of water pollution in major rivers in India? Untreated sewage is correct answer. Untreated sewage is the major reason of pollution, water pollution in India. Next, Kyoto Protocol assigned which responsibility for developed and developing nations? Higher, common but differentiated. Option B is correct answer. Next, which of the following is the correct sequence with reference to density of population of state according to census 2011? कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ओके, इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है। सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी ना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Population explosion happened in India because of high birth rate, relatively low death rate, immigration, or a relative moderate birth and death rate. A and B are correct answer. Birth rate भी ज्यादा और death rate कम हो गया है, तो A and B both are correct answer. Option A is correct answer. Next, consider the following list and choose the correct code. Religion group and population growth rate census 2001 to 2011 दिया है। हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो 2001 टू 11 का जो ग्रोथ रेट था वो था हिंदूज का 16.8, मुस्लिम का 24.6%, सिख का 8.4% और क्रिश्चियन का 15.5%। तो करेक्ट सीक्वेंस इज 2, 3, 4, 1. Option B is correct answer. Next, adolescent population is the population falling in the age group of 1 to 15, 1 to 10, 10 to 19, 10 to 25. Option C is correct answer. As per WHO definition, World Health Organization का definition है adolescent population जिसके age group 10 to 19 है। तो option C is correct answer.
Next, who identified industrialization, urbanization, and modernization as a causal mechanism in bringing decline in mortality and fertility? Mortality means death rate, and fertility means birth rate. So, Frank Nosten, A option is correct answer. He linked modernization with fertility decline in demographic transition theory. Next, the technological dualism in underdeveloped countries could be broken through dash. Technological dualism means production through modern method as well as traditional method. Means capital intensive method जो modern method है plus labor intensive method जो traditional method है. तो टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म अडॉप्ट करने से अंडर डेवलप कंट्रीज या फिर जो रूरल एरिया होती है वो सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ऑप्शंस: ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग, प्लानिंग फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया और फोकसिंग ऑन आईटी सेक्टर. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लानिंग फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन रूरल सेक्टर. इससे अंडर डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिजिटल ऑल innovation and technology for gender equality. Gender equality was the theme for International Women's Day in the year dash by UN. Women. Women के लिए ये थीम हर साल डिफरेंट डिफरेंट थीम होती है. तो डिजिट ऑल वाली थीम कौन से ईयर में था? 2020, 21, 22, 23. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. 23 में डिजिट ऑल का थीम था. आप 24, 25, 26 का चेकआउट कर सकते हो. हर साल डिफरेंट थीम लॉन्च होती है 8 मार्च को, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है. उस दिन यूएन न्यू थीम लॉन्च करता है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. नेक्स्ट, इन 1947 सीपी ब्लैकर attempted to identify dash phases of demographic transition. कितने phases थे? 3, 4, 5, 6. करेक्ट आंसर इज 5 phases. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी की बात हो रही है. नेक्स्ट, with reference to the Banks Board Bureau, which of the following statements are correct? The governor of RBI is the chairman of BBB. No. BBB recommends for the selection of heads of public sector. Correct. BBB helps the public sector banking for developing strategies and capital raising plan. True. 2 and 3 are correct, and option B is correct answer. Next, rapid financing instrument and rapid credit facility are related to provision of lending by ADB, IMF, UNEPFI or World Bank. Option B is correct answer, International Monetary Fund. Next, match the following in context to G20 engagement group, group B20, C20, L20, T20. B24 business, C24 civil society, L24 labor and T24 think tank. So B20 working area क्या है? Energy, climate and resource efficiency. Option 1. Climate policy and finance. ये है think tanks. Sustainability, energy and climate. ये civil society and interest of workers, labor. 1, 3, 4, 2 is correct sequence. 1, 3, 4, 2. Option C is correct answer. Next, which of the following is not a scheme offered by Mudra Bank? Sishu, Kishore, Tarun, Nari. Option D is correct answer. Micro, small, medium. MSME सेक्टर का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस. तो माइक्रो मीन्स शिशु, स्मॉल मीन्स किशोर, मीडियम मीन्स तरुण. तो नारी इज नॉट a scheme offered by Mudra Bank. Option D is correct answer. Next, National Health Policy 2017 has recommended the increase in the government health expenditure up to dash percentage of GDP by 2025. Correct answer is option B, 2.5%. Next, which of the following sequence is correct about share capital in RRB?
सबसे ज्यादा शेयर कैपिटल किसका होता है आरआरबी में? सेंट्रल बैंक 50% प्रोवाइड करती है, फिर स्पॉन्सर्ड बैंक 35% एंड स्टेट बैंक 15% प्रोवाइड करती है। तो सीबी ग्रेटर देन स्पॉन्सर्ड बैंक ग्रेटर देन स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान was announced by Prime Minister Modi in which year? 12th March, 12th April, 12th May or 12th June 2020? Option C is correct answer. It is 12th May 2020. Next, India's own target to achieve net zero carbon emission is by which year? 2050, 40, 60, 70? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इंडिया का टारगेट है 2070 का और चाइना का टारगेट है 2060 का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट 1 and 2 फाइनेंस कमीशन एंड चेयरमैन 12th, 13, 14 and 15 फाइनेंस कमीशन। सो विजय केलकर 13, सी रंगाराजन 12, एनके सिंह 15 एंड रेड्डी 14। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? 2, 1, 4, 3। 2143. Option B is correct answer. Next, the non-scheduled banks are those which have not been included in the dash schedule of RBI Act 1934. Schedule 2 scheduled bank की list है, उसमें non-scheduled banks are not included. तो option D is correct answer. Next, mutual fund in India have to be formed as trust. Option A is correct answer. Next, Tarapur Committee appointed in 1997 was for which of the following purpose? To work on current account convertibility of rupee, capital account convertibility of rupee, current and capital or partial convertibility of rupee. Option B is correct answer. Capital account convertibility of rupee. Next, the Prevention of Money Laundering Act was passed in which year? 2002, 3, 4, 5. Correct answer is option A. 2002 में एक्ट पास हुआ था पर इन फोर्स फ्रॉम 2005 with effect from 2005. Next, which of the following is established resolution of NPA in India? National Non-Performing Asset Company Limited, National Performing Asset Limited, National Reconstruction Capital Company Limited or National Asset Reconstruction Company Limited. D is correct answer. Next, which of the following is a refinance institution in India? National Housing Finance, Exim Bank, General Insurance or Tourism Finance? Option A is correct answer. The National Stock Exchange was set up in 1992. Option C is correct answer. The reserve money in India is also called as low powered money, high powered money, secondary money or advanced money. Option B is correct answer. High powered money. High powered money means currency with public plus bank reserve with RBI. That is high powered money. Option B is correct answer. So here we have completed Maharashtra set examination for economics June 2025 क्वेश्चन पेपर, और मैंने पेपर 1 जनरल पेपर का भी जून 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपलोड कर लिया है। आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग, बाय।